Okay, beta. Today we will again discuss about the flow chart of program 2. In program 2, we have discussed that number square and cubes, right? We already discussed this program. Today we will make its flow chart. So in program number 2, what actually our task was? Our task was in this program to generate a table in which there should be a number from 1 to 10, and then this program should to uh, calculate the square, cube, and nothing. So uh, we will generate our number from 1 to 10 with the help of for loop, right? So that's why, look at here, uh, in the line number 10 CLS 20, print number between the inverted commas, then comma, then square, comma, then cube. अब ये कॉमा हमने क्यों बेटा लगाया था? Because this comma will actually create a one tab difference, right, or distance. After that, at the line number 30, we have for I is equal to 1 to 10. So this is actually our for loop from 1 to 10. Its boundary value is from 1 to 10. I is a variable which we use. At the line number 40, I am using that s is equal to I multiplied by I. How we will calculate the square of any number? Square कैसे calculate होता है? Square means the number multiply by itself again, right? 1 का स्क्वायर कैसे होगा? 1 multiply by 1. 2 का स्क्वायर कैसे होगा? 2 multiply by 2. So where we have a number, we have a number in our variable I. So that's why we actually multiply I into I. So square is equal to I multiplied by I. Okay. Then how we calculate the cube? Cube, we can calculate cube I multiplied by I multiplied by I 3 times. Cube means power 3. So I multiplied by I multiplied by I. Or another method is that I cap 3, which means I raised to power 3. We can also write here I raised to power 2. मैंने दोनों मेथड लिख दी हैं. You can follow anyone. लेकिन जो लाइन नंबर 50 पे, that is a standard one, right? I raised to power 3. After that, at the line number 60, we are gonna print the values of I, which is a number, S, which is a square, and C, which is a cube. And then next I, and this next I will actually continue this loop from 70 to line number 30. तो ये continuously चलता रहेगा until and unless the value of the boundary will be maximum than 10. So if I run this program, I'm gonna write RUN or enter, or directly you can also press F2 key. So when we run our program, you can see here that we have a number from 1 to 10. We have its square and then cube. So that was our program number 2. But today we will discuss its flow chart, that how to make its flow chart. Now look at here. What actually we do here. सबसे पहले तो बेटा ये start होगा. I already informed you all in the last class that whenever you start your flow chart, you have to make which symbol beta? Switch on your mic and tell me. आपके mic मैंने on रखे हुए. Yes, Haris.
सर एरो। नहीं बेटा, जब स्टार्ट करते हैं तो एरो थोड़ी होगा। कौन सी शेप है स्टार्ट पे? ओवल। गुड। मैंने ये बताया था, whenever we start our flow chart, always we start from the oval shape। ठीक है, हमेशा स्टार्ट और एंड पे ओवल शेप आती है, स्टार्ट पे और एंड यानी स्टॉप पे। ओके, सो oval shape start, and then we have look at the command from the code। सबसे पहली कमांड है हमारे पास cls, and we do not represent cls in our flow chart, right? Next command we have at the 20, that is print number, square and cube. And for print and input, both command, for both of these command we actually use a parallelogram symbol. So here we have a print number, square, cube, so we use here a parallelogram। Look at here, this shape, right? So इस shape के अंदर हम whatever we have like print number, square and cube, we will write here. The next command we have for I is equal to 1 to 10, that is a loop. For loop we actually use a predefined process box। So look at here, it's here, ठीक है जी। And after that we have a line number 40, that is s is equal to I multiplied by I, that is a equation। s is equal to I multiplied by I, या चाहें तो इसको I cap 2 लिख सकते हैं आप। So this is equation, so for equation we use a process box जो कि एक रेक्टेंगल होता है, ठीक है। तो उसके लिए ये आ गया हमारे पास एक process box। Okay, after that we have next is c is equal to I power 3, which is again process box, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास we have a process। Next we have print ISC, again parallelogram। So here we have, then we have a next I, ठीक है। यहाँ पर एक मिस्टेक हुई भी कि I के लिए नहीं है मौजूद, ठीक है। तो हम ज़रा इसको हटाते हैं, and for I we will actually make um, just a minute, let me do this। So here we have now, right? Okay, now it's fine। So after this print IC as we have next I, right? So मैंने बताया था आप लोगों को last class में भी, for next I we use a process box, right? That is a rectangle box। So after that our program is finished। Now we use again a oval shape for stop our program। मैं इसको थोड़ा सा और ऊपर ऊपर कर देता हूँ। प्रॉब्लम करेगा, इट्स ओके फाइन। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन बेटा?
वालेकुम अस्सलाम हफ्सा। Yes, any question you can switch on your mic बेटा। आपके माइक ऑन है। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? सर मुझे यहाँ से समझ में नहीं आया s equals to 1 star 1 से। कहाँ से? s is equal to i स्टार i मल्टीप्लाई i है। star आई। देखिए ये प्रोग्राम था आपका, ठीक है। तो क्या है अब यहाँ पर s is equal to i मल्टीप्लाई बाय i, ठीक। तो दैट इज अवर इक्वेशन। तो फॉर इक्वेशन वी यूज प्रोसेस बॉक्स, ठीक है। तो मैंने उसे एक प्रोसेस बॉक्स में रख दिया। सेम फॉर द लाइन नंबर 50, c इज इक्वल टू i कैप 3। अच्छा ये जो 40 पे मैंने लिखा है s इज इक्वल टू i मल्टीप्लाई बाय i, आप इसको यूं भी लिख सकते हैं। यू कैन ऑल्सो यूज s इज इक्वल टू i कैप 2। देखिए मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। आप इसे चाहें तो इस तरह लिखें, बाय स्क्वायर क्या होता है? नंबर मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ ना। जैसे 2 का स्क्वायर कैसे कैलकुलेट करते हैं? 2 मल्टीप्लाई बाय 2। 3 का क्या होगा? 3 मल्टीप्लाई बाय 3। सो इट मीन्स दैट i मल्टीप्लाई बाय i, यानी i एक वेरिएबल है जिसमें वो वैल्यू होगी, वेदर इट्स 2 3 4 और एनी नंबर। तो स्क्वायर कैसे कैलकुलेट होगा? i मल्टीप्लाई बाय i। तो हम इस i मल्टीप्लाई बाय i को हम क्या लिख सकते हैं? i कैप 2। ठीक है, मैं जूम कर देता हूँ, जूम करके दिखाता हूँ। तो क्या है, आप इसको बेटा इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये बस आप पे डिपेंड करता है कि आप इसे किस तरह से लिख रहे हैं। ये कैप मीन्स रेज टू पावर, राइट? सो आई रेज टू पावर 2। गॉट माय पॉइंट? ओके। तो आपकी मर्जी है, आप इस तरह लिखें तब भी आपका आंसर करेक्ट आएगा। सो दिस इज ऑल्सो अ इक्वेशन। तो इक्वेशन है तो हमने प्रोसेस बॉक्स में रख दी। एंड आफ्टर दैट वी हैव अगेन प्रिंट आई एस सी। सो प्रिंट या इनपुट के लिए हम क्या यूज करते हैं? वी यूज पैरेललोग्राम। सो हियर वी हैव अ पैरेललोग्राम, and after that we have a next eye, and I already discussed about this, that whenever we have a next eye we'll use a process box. So here we have, right? And after that our program is finished, so we use a stop. Clear beta? Yes Usman, is there any problem again? Okay, one question from Hafsa. सर कंप्यूटर की बुक चेंज हो गई है? नो बेटा हफ्सा, मैंने भी वो बुक देखी जो सर्कुलेट कर रही है। नंबर वन इज़ दैट कि अभी तो ये भी कंफर्म नहीं है कि वो जो है वो हकीकत है या नहीं, यानी वो बुक जो है अथेंटिक पोस्ट है कि नहीं उसकी जो शो हो रही है। नंबर टू, इन केस अगर वो अथेंटिक है भी तो वो इस साल चेंज नहीं होगी, वो नेक्स्ट ईयर होगी। अगर वैसे उस बुक की जो फाइल आ रही है उसके नेम को भी रीड करें तो उसमें 2021 लिखा हुआ। तो इस साल तो पॉसिबल ही नहीं है ना कि वो बुक यूज हो। हाँ, नेक्स्ट ईयर से पॉसिबल है कि वो बुक चेंज हो जाए जो नेक्स्ट ईयर 9 में आएंगे बच्चे। ओके, सो दैट इज अवर प्रोग्राम नंबर 2। ये हमने पहले काफ़ी प्रोग्राम डिस्कस किया था, आज हमने उसका फ्लो चार्ट देख लिया, ठीक है। फ्लो चार्ट आप लोग साथ साथ ड्रॉ भी करते जाएं बेटा। मुझे पता है अभी तक किसी ने ड्रॉ नहीं किया होगा आप में से। अभी ड्रॉ करें आप लोग जल्दी से ये। सर जिन बच्चों का क्विज रह जाएगा तो वो कब देंगे? बेटा रहेगा क्यों? नहीं, ऐसे अगर टाइम कम रह गया, किसी बच्चे का रह गया नहीं कोई तो उसका भी रहेगा दोबारा नहीं, नहीं बहुत होगा। टाइम होगा, बहुत टाइम होगा।
इसी टाइम के बीच में होगा, दोबारा किसी का रिपीट नहीं होगा। बेटा इस फ्लो चार्ट को जल्दी से बना लीजिए आप लोग। सर आपने अब तक पूल तो भेजा नहीं है, हम कौन से पूल में? बेटा आपको मैं नहीं भेजूंगा, आपकी क्लास टीचर भेजेंगे। ये ले मैंने साइज को छोटा कर दिया। नाउ यू कैन ड्रॉ इट। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, लेकिन मुझे पता है वो लेकर आप बाद में बनाते नहीं हैं। ओके नाउ वी हैव नेक्स्ट our प्रोग्राम नंबर 3A। मैं इसका कोड भी स्टार्ट कर लेता हूँ। सर आप इस तरह के क्वेश्चन कर सकते हैं कि एबेकस कौन से ईयर में डिस्कवर हुआ, किसने किया? हाँ बेटा बिल्कुल हो सकते हैं, सही। अच्छा जी, now look at here बेटा, that is our program number 3A। सबसे पहले इस प्रोग्राम को देख लें, इसमें किया क्या था। इस प्रोग्राम का हमारा जो टास्क था, दैट इज our computer will ask us about the table number, so whatever the number we actually put, it will generate its a table। look at here, जैसे मैंने ये रन किया F2, it's asking me about the number, so if I press 3, only one time 3 and then enter, तो ये 3 का पूरा टेबल जो है वो जनरेट करके दे देगा। कोई भी नंबर आप इसमें दें, मैं दोबारा रन करता हूँ, आप 13 लिख कर एंटर कर दें, सो इट विल गिव यू द टेबल ऑफ 13, राइट। तो इसका आप देखते हैं फ्लो चार्ट कैसे बनेगा। ठीक है, ये एक्सप्लेन मैं कर चुका हूँ प्रोग्राम, सो अगेन आई विल नॉट डिस्कस अबाउट दिस, वी ओनली डिस्कस इट्स अ फ्लो चार्ट। ठीक है, ये so again first of all we are going to start our flow chart। so for start first of all we'll make our oval shape and write start, then look at the program cls को represent नहीं करते। after that we have input, and in this input it will ask about the table number। ठीक है, एंड इनपुट और प्रिंट के लिए मैंने बताया था वी यूज अ पैरेललोग्राम, सो हेयर वी यूज पैरेललोग्राम। यहाँ पर देखें तो मिस्टेक हुई हुई है, और वो मिस्टेक ये है कि पैरेललोग्राम यूज नहीं किया हुआ फॉर द इनपुट। ठीक है, ये मैंने लास्ट ईयर बना के रखे थे, कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ हो ही जाती है। चलो इसको ज़रा नीचे करते हैं, इसको भी ज़रा नीचे करते हैं। मैं दोबारा से ये पूरा ड्रॉ करके आपको दिखाता हूँ।
इनपुट लिया हमने टेबल नंबर का, फ्लो लाइन्स हम एंड में बना लेंगे, पहले इनको देखते हैं। इसको थोड़ा सा बड़ा कर दो, the code of it. So input enter any table number. मैंने ये words नहीं लिखे, डायरेक्ट मैंने TBNO लिख दिया, which actually represent that we are taking our input as a TBNO, table number. TBNO is a short form for table number. This is a variable, so we must should use a shortest variable, so that's why we are using here TBNO. Okay, after that at the line number 30, just look at it. What actually we are doing. We are using a print, comma, print. This is actually for one line distance. So ये one line distance that is a formatting. So we do not represent our formatting in our flowchart. As it is here, we have a heading, then line. So these three lines, 30, 14, 50, these are actually the formatting of our program. So we don't represent these things in our flowchart. ठीक है, इसलिए मैंने इनको यहाँ use नहीं किया. After that, at the line number 60, we have a for I is equal to 1 to 10. Again, this is a loop. So for loop, this is a for loop. So for loop, we use a predefined process box for capital loop. After that, we have ANS is equal to TVNO multiplied by I. ANS is our variable. So this is our equation, and for equation we use here a process box. Then we have print, TVNO, and so on and so forth. So here we have a print command, and for print command we use a parallelogram. Then we have a next I, and for next we use process box. And after that our program is finished, so here we have a stop, right? So this is our flow chart of program number 3A, right? मैं इसकी फ्लो लाइंस बना देता हूँ. आपने ये सारा काम हाथ से पेंसिल से करना होगा आपके प्रैक्टिकल फाइल में, ठीक है? फिलहाल तो खैर मैं यहाँ पे कर रहा हूँ. Is there any question? जी बेटा, इसमें किसी का कोई क्वेश्चन? आपके माइक खुले हुए हैं बेटा. हेलो बच्चों, एनी क्वेश्चन? No, sir. ओके, अच्छा अब जल्दी से हम जो है एक और देख लेते हैं. 3 का बी जो था, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग. ले लिए स्क्रीनशॉट? Yes. ठीक है, मैं Yes, sir. जब तक मैं प्रोग्राम भी ऑन कर लेता हूँ. log 3. Okay बेटा, now look at her. That is our program number 3B. ये भी हमने पहले डिस्कस कर लिया था. इसमें क्या किया था हमने? We actually calculate the total and average of 4 different numbers, right? मैं भी इस प्रोग्राम को ऐसे रन करता हूँ. So it's asking me the first number. For example, मैंने दिया 4, second number 2, 3, and fourth number is 5.
whenever I press again enter after the giving it a fourth number, then what actually will happen? Just look at here. जैसे ही मैंने इसे नंबर दिया, इसने किया क्या बेटा? इसने मुझे बताया कि फर्स्ट नंबर 4 था, सेकंड 2, देन 3, देन 5, और उसने फिर टोटल बता दिया कि इन चारों नंबर का टोटल कितना है, दैट इज 14, एंड द एवरेज इज 3.5। एवरेज कैसे कैलकुलेट होता है? टोटल नंबर जो हमारे पास है दैट इज 14 डिवाइड बाय द नंबर ऑफ टर्म्स। कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है? 4 है। फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर एंड फोर्थ नंबर, हमारे पास 4 नंबर हैं। सो 14 डिवाइड बाय 4, दैट इज अ फॉर्मूला टू कैलकुलेट द एवरेज ऑफ एनी नंबर। तो ये हमारे पास प्रोग्राम है, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू मेक इट्स अ फ्लो चार्ट। ये देखिए मैंने बना के रखा हुआ है, जल्दी से हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट अवर फ्लो चार्ट। CLS नहीं बनेगा, हेडिंग है, सो अगेन इट्स नॉट gonna be shown। print and print again one line gap, so again हम इसे भी मेंशन नहीं करेंगे। आफ्टर दैट लुक इट है, गौर से इसको देखें। इनपुट इंटर फर्स्ट नंबर, तो मैं क्या यूज करूंगा इनपुट के लिए? पैरेललोग्राम, ठीक है। तो मैं ये चीज लाइन नहीं लिखूंगा, मैं डायरेक्ट क्या यूज कर सकता हूँ? इनपुट NO1 या N1 को जो भी आप वेरिएबल रख दें, ठीक है। तो एक पैरेललोग्राम बनेगा, उसमें आएगा इनपुट N1, फिर अगला पैरेललोग्राम आप बनाएंगे इनपुट N2, देन इनपुट N3 एंड इनपुट N4। अब होता क्या है कि आप इस चीज़ को शॉर्टेस्ट फॉर्म में इस तरह भी कर सकते हैं कि आप एक ही इनपुट लें और उसमें चारों वेरिएबल लिख दें, क्योंकि आप सीक्वेंस के साथ क्या ले रहे हैं यहाँ पर बेटा? यू आर टेकिंग अ इनपुट 4 टाइम, सो वी कैन यूज इट हेयर। लुक इट हेयर, इनपुट N1 N2 N3 एंड N4। अब मैंने यहाँ पे NO1 लिखा, ठीक है। तो आप यहाँ NO1 भी लिख सकते हैं या N1 N2 इस तरह भी लिख सकते हैं, इट्स जस्ट डिपेंड्स अपॉन यू। याद रखिएगा ये वेरिएबल के नेम है, तो आपकी मर्जी, यहाँ पर कुछ भी आप लिखें। Okay, after that we are, look at here at the line number 80, we are using total is equal to N1 N2 N3 and N4। सपोज कर लें N1 मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये चारों क्या हो रहे हैं? ऐड होंगे, और इनको ऐड होके जो वैल्यू होगी दैट विल स्टोर इनटू द वेरिएबल टोटल, ठीक है, टोटल। तो दिस इज अगेन इक्वेशन, सो फॉर इक्वेशन वी यूज हियर process box. After that we are using AVG. AVG is a short form for the average. Average is equal to total divided by 4। अगेन इट्स अ फॉर्मूला और इक्वेशन, तो यहाँ पर ही आ गया। उसके बाद अगेन देखें ज़रा बेटा, प्रिंट 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 प्रिंट, 4 मरतबा प्रिंट हो रहा है। सो एक मरतबा प्रिंट लिखा, प्रिंट क्या हो रहा है? N1 N2 N3 एंड N4, तो मैंने वो लिख दिया, ठीक है। उसके बाद ये जो है वन लाइन गैप है, इसको अगेन रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। आफ्टर दैट वी हैव प्रिंट टोटल, ठीक है। तो प्रिंट हमने कर दिया टोटल एज इट इज प्रिंट एवरेज, सो अगेन प्रिंट average, and after that our program is finished. So here we have is there any question for this? Yes beta, any question? स्क्रीनशॉट ले लो, क्लास एंड होने वाली, जल्दी से पहले तो स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन यकीनन नहीं होगा आप लोगों का कोई भी। सर कौन सा क्वेश्चन? क्या बेटा? टेक ए स्क्रीनशॉट फॉर दिस। सर ले लिए। ठीक है, चलिए ठीक है बेटा, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।